Namaste. Welcome back to my YouTube channel eEducator. So here chapter number 23 of a standard 10. As you know the subject social science, chapter 23 road safety and motorist. We discuss about the textbook exercise. So still if you have not subscribed my channel, subscribe and see the playlist. Standard 10 के सभी चैप्टर के वीडियोस आपको वहां पर मिलेंगे. You can also check this video description box. वहां पर सभी चैप्टर के वीडियो के लिंक भी आपको वहां से मिल जाए. You can write from there. Okay, let's start the discussion of chapter number 23, road safety and motorist. Okay, let's take about the weightage. Look at the weightage of chapter number 22 and chapter number 23 का जो weightage हो 2 मार्क्स का. चैप्टर नंबर 23 का भी weightage 2 मार्क्स का है. प्रोबेबिलिटीज ज्यादा है कि इसके अंदर से ऑब्जेक्टिव आएंगे, फिर भी हमें 2 मार्क्स के लिए भी प्रिपेयर रहना होगा. ये चैप्टर 22 एंड 23 है, इसमें प्रोबेबिलिटी 90% ऐसा है कि ऑब्जेक्टिव ही आएंगे, बट 2 मार्क्स का वेटेज है तो कभी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है. तो गो थ्रू दोज क्वेश्चन विच एज अ शॉर्ट आंसर, जितने भी है 2-2 मार्क्स वाले आ सकते हैं उतने ऑब्जेक्ट के लिए भी इसमें से प्रिपेयर रहिए. लेट्स स्टार्ट द डिस्कशंस हियर. Okay, write detailed answers to the following questions. We need to write the detailed answers. The questions are here. State the importance of wearing a seat belt. We need to write about wearing of importance of a seat belt. A seat belt protects drivers and other passengers from serious injury in the case of a road accident. So if you wear a seat belt, driver as well as the co-passenger जितने भी बैठे हैं आज अभी तो 4 व्हीलर के अंदर या कहीं पर भी आप जाओगे तो सीट बेल्ट वहां पर सभी के लिए, सभी पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट यहाँ पर आता है. पीछे बैठने वाला तीनों के लिए भी सीट बेल्ट होता है, आगे वाले के लिए भी सीट बेल्ट आता है. सो दैट ड्राइवर्स एंड अदर पैसेंजर्स होते हैं उसको सीरियस इंजरी से वो बचाता है. इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द फैटल इंजरीज कॉज्ड बाय द एक्सीडेंट. एक्सीडेंट जो सीरियस इंजरी फैटल इंजरी होता है उससे वो बचाने का काम करता है. इट सेव द पैसेंजर फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंजरी. इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंजरी जो होती है कहीं से, तो सीट बेल्ट आपने पहना है तो उससे इंजरी नहीं होती है, मतलब चांसेस बहुत ही कम हो जाता है, कम हो जाता है कि इंजरी आपको हो. So what are the provisions regarding the age limits for obtaining a driving license? Okay, driving license लेना है उसके लिए age limit का criteria कौन सा है? A person who has completed 18 years, look at the person who has 18 years can get a license to drive all type of motor vehicles. The person who has 18 years has a right, okay, that has been given that they can obtain motor vehicles license, except heavy transportation का उसको नहीं मिलता, बाकी 2 व्हीलर 4 व्हीलर का मिलता है. heavy transportation के लिए उसको थोड़ा और 2 ईयर राह देखना पड़ेगा. A person aged 16 years of or older can get a license to drive a 2 wheeler without gear, motorcycles without gear. Okay, the code is given about motorcycle without gear here. That MCWOG, motorcycle without gear with engine capacity of 50cc का जो engine होता है जिसमें gear नहीं लगता है, उसके लिए आप 16 साल के बाद उसको अप्लाई कर सकते हो लाइसेंस के लिए. A person who has a license to drive a motor light motor LMV, जैसे 4 व्हीलर जैसे LMV होता है, 4 व्हीलर के लिए LMV का वर्ड यूज किया जाता है. ऑटो रिक्शा है और ये 4 व्हीलर जितनी कार्स है उसके लिए जो लाइसेंस होता है उसको लाइट मोटर व्हीकल के अंदर वो आता है. फॉर मोर देन 1 years it can लाइसेंस टू ड्राइव हेवी व्हीकल्स. 1 साल के बाद आप हेवी व्हीकल के लिए अप्लाई कर सकते हो वंस कंप्लीटिंग 20 years ऑफ एज. हेवी व्हीकल के ट्रक चलाने के लिए वो उसके जो हेवी व्हीकल से मोर देन 4 व्हीलर वाले जो व्हीकल्स आते हैं वो हेवी व्हीकल के अंदर आ जाता है. Question number 2, answer the following questions to the point. Write a note on duties of a driver. What are the duties of a driver? Okay, list of duties are given more. Textbook में बहुत ज़्यादा ही है. So drivers should perform the following duties. Which are the duties? A driver should drive only if he is physically and mentally fit, able to drive. So driver should take care, mentally fit है, physically fit है, फिर तो ही उसको अपना vehicle drive करना चाहिए. The driver should drive with special care and cautious to the ensure the safety of a pedestrian. जो driver जो भी drive कर रहा है, they need to take care, they need to cautious about the pedestrian. Pedestrian जो रास्ते पर लोग चल रहे हैं उनके लिए. Cyclists, those person who are driving riding the cycle, children's and the elderly peoples are and disabled people जो कहीं पर रोड पर चल रहे हैं तो उसको ध्यान में रख के आपको गाड़ी चलानी है. The driver should ensure that he had other passengers also wear a seat belt while driving. So driver make sure that the other co-passenger जो है
वो भी सीट बेल्ट पहने. So the motorcycle rider and the okay pillion rider must wear a helmet. मोटरसाइकिल राइड कर रहे हो तो मोटरसाइकिल राइडर है उनको भी हेलमेट पहनना, उसके पीछे जो बैठा है उनको भी हेलमेट पहनना जरूरी है. So the vehicle driver should not drive under any kind of intoxications. Intoxication like alcohol और दूसरा कोई intoxication के through उसको vehicle drive नहीं करना चाहिए. A vehicle with any kind of a defect should not be driven on the public road. So कोई भी vehicles ऐसा है defective vehicle है, those defective vehicles, so those defective vehicles should not be drive on a public road. So public road पर वो drive नहीं करना चाहिए. Now check the vehicles that tires are properly inflated and mechanical condition including brakes are in good technical condition. So before driving we need to check the टायर के अंदर एयर प्रेशर सही है, ओके, और ब्रेक सही तरह से लग रहा है कि नहीं उसका चेकिंग करने के बाद टेक्निकल कंडीशन सही है, बाद में ड्राइव करना चाहिए. और riders should not catch or push any other vehicles while driving or traveling on a motorcycle or three-wheel vehicle. So while driving a vehicle we make sure that we should not catch, मतलब जो ड्राइव कर रहा है तो चलो कि उसके आगे चला जाए, उसको पकड़ ले, उसकी स्पीड से हमारी स्पीड ज्यादा हो, वैसे नहीं करना चाहिए. मोटरसाइकिल है या थ्री व्हीलर है, कहीं पर भी रेस नहीं लगानी चाहिए. While opening the doors, once we are opening the door getting out of a vehicle, one should take care of not having collisions with the vehicle coming from behind. So once we have hold the vehicle or stop the vehicle on the road, so we make sure that पीछे से कोई vehicle नहीं आ रहा है, उसके बाद ही दरवाजा खोले और उसके अंदर बाहर जाने की जो भी प्रोसेस है, मतलब बाहर आ रहे हो तो देखना चाहिए कि पीछे से कोई नहीं आ रहा है. अब अंदर जा रहे हो फिर भी देखना चाहिए कि पीछे कोई व्हीकल नहीं आ रहा है, अचानक से दरवाजा खोलो और एक्सीडेंट हो जाए. Do not honk unnecessarily or continuously or in designated quiet areas while driving. So unnecessary आपको हॉर्न नहीं बजाना है. जो designated area का हॉस्पिटल है, स्कूल है, तो उस एरिया के अंदर जहाँ पर नो हॉन्क है, जहाँ पर हॉर्न बजाना नहीं है, वहाँ पर. Answer the following questions briefly. State the points to be kept in mind at the crossroad or roundabout. Roundabout है या crossroad है, चार रास्ता होता है, आप क्रॉसिंग होता है वहां पर. राउंडबाउट तो सर्कल होता है, राउंडबाउट में सर्कल है जहां पर, तो वहां पर आप पहुंचने के टाइम आपको क्या देखना चाहिए. सो व्हीकल शुड बी स्लोड डाउन when our vehicles is about to be reach crossroad, junction or roundabout. So once you reach near to the crossroad or once you reach junctions or roundabout, कहीं पर भी पहुंचे हो, you need to slow down your vehicle. आपका vehicle का speed है वो कम करना है. At the intersections, जहाँ पर intersection है, क्रॉस रोड है, जंक्शन है, okay, और रेलवे का कहीं पर भी जंक्शन कोई भी है, और राउंड बाउट कहीं पर सर्कल बनाया हुआ है, तीन रास्ता है, चार रास्ता का जंक्शन कहीं पर भी आ रहा है. व्हीकल कमिंग फ्रॉम द राइट शुड बी गिवन अ प्रायोरिटी. तो आपके साइड के अंदर से जो राइट साइड से जो आ रहा है उसको प्रायोरिटी पहले देना चाहिए. राइट साइड वालों को आगे जाना चाहिए, फिर से आपको कहीं क्रॉस जाना है, मतलब कहीं से रोड को क्रॉस करना है और सर्कल को क्रॉस करना है तो फिर से आपको जाना चाहिए. Driver should indicate the necessary signal and while changing lane at the roundabouts. Once you change the lane, you need to provide your signal. Indicator जो होता है आपको इंडिकेटर देना चाहिए, उनके बाद सिग्नल देने के बाद ही आपको अपना लेन चेंज करना होगा. All the precautions taken while turning to the left should also be observed while exiting at the roundabouts. आप लेफ्ट रह रहे हो तो आपको दोनों साइड देखना है, उनके बाद ही आपको राउंडबाउट को टर्न लेकर वहां से आगे जाना है. So while what thing the driver should keep in the mind while stopping the vehicle. So आप vehicle कहीं पर भी stop कर रहे हो तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए. So while stopping the vehicle, care should be taken not to cause any discomfort or inconvenience to any persons. Once you stop the vehicle, you make sure that not cause any inconvenience to the persons those who are driving on the vehicle. So अगर आपने हाईवे पर कहीं पर अपना होल्ड किया है, स्टॉप किया है, तो ट्रैफिक को कोई इश्यू ना हो और दूसरे जो लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उस हिसाब से आपका व्हीकल स्टॉप करना है. While opening the door and getting out of a vehicle, one should be careful not to have collisions with a vehicle coming from behind. So we need to take care while opening the door or getting out of or get inside of a car. तो पीछे से कोई नहीं आ रहा है, उसका ध्यान रखना चाहिए. Never stop your vehicle in such a way to obstruct the traffic on the road. आपका vehicle कभी भी ऐसा stop नहीं करना चाहिए which cause a traffic. And other roads usually obstruct in a smooth flow of traffic. We should park a vehicle in the side of a road. Okay, that MCQ here.
after what age one gets a license to drive two-wheeler of engine capacity of a 50 cc without a gear. So 50 cc के लिए 16 year है. In which lane should light, medium speed and heavy vehicle normally should be driven? There should be driven in leftmost. लेफ्ट में चलाइए, जो स्पीड वाला हो राइट से आगे, राइट से आते हुए आगे चला जाएगा वो. आफ्टर व्हाट एज कैन हेवी व्हीकल ड्राइवर okay heavy driving license be obtained after a age of 20? So first C, second C and third D. These are the correct answer of MCQ. Okay, hope you like these videos. Okay, chapter number 23 and all the chapters are videos are now uploaded. Okay, so you can see the this video description books में आप देख सकते हो, वहाँ से आपको ये वीडियोस के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएगी, सभी वहाँ से आप दूसरे वीडियो एक्सेस कर सकते हो. So if still if you know subscribe and share with your friends and colleagues. If you have queries, send me in a comment. Thank you.